Hello student, this is the third part of the lesson, that is nationalism and rise of Hitler. In previous part we discussed about the birth of Weimar Republic. Means what was the reason for forming the government, Weimar Republic government, and how that government had no trust, and what was the humiliating peace between the allies or winner between the allies and central power, and why this accepted by the Weimar government, and how that was insulting or humiliating and harsh, that we have seen. Even though we discuss 1.1, that is effects of the war in European countries and even Russia. Now we discuss about page number 1 page number 52 of your textbook. 52 of your textbook. Here 52 of your textbook. Then 1.1 that already we have discussed. Then come to the 1.2, political radicalism. Political radicalism and economic crisis. Political radicalism in economic crisis. Here the birth of Weimar Republic, that was newly formed government after the defeat in First World War of the Germany. Newly formed government that was known as Weimar, and birth of this government, Weimar Republic, coincide with the revolutionary uprising of the Spartacist League on the pattern of Bolshevik revolution in रशिया. मीन्स बोल्शेविक जो रिवॉल्यूशन थी रशिया में, जो हमने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया है, तो इसी प्रकार की स्पार्टसिस्ट लीग जो है वो इस रिवॉल्यूशनरी मीन्स दे वेर opponent of this Weimar government formed in this German. Then Soviet of the workers, Soviet of the workers and sailors were established in many cities. मीन्स यहाँ के अलग अलग सिटीज़ में क्या इस्टेब्लिश हुए थे? सोवियत ऑफ द वर्कर्स मीन्स associations, workers association, and sailors. Here term was, that is radicalism. So what is the meaning of radicalism? See here, in radicalism means any of the various social and political movements. Radicalism means any of the various social and political movements that act for the fundamental changes in structure of the society. सोसाइटी के फंडामेंटल
मीन्स स्ट्रक्चर में फंडामेंटल चेंजेस लाने के लिए जो ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट की जाती है, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, उस ग्रुप को कहा है रेडिकलिज्म. एंड सच अ रेडिकलिज्म दैट फॉर्म इन द Germany with which groups were there in this radicalism. Spartacist League on the pattern of Bolshevik revolution in Russia. रशिया के धरती पे या रशिया जैसे ही स्पार्टासिस्ट लीग, यह बोल्शेविक लीग जर्मन में फॉर्म हुई. एंड दे वर्क एज अ radicalism. They wanted to bring the changes, political changes. So, political atmosphere in the Berlin was charged with the demand. Berlin, it is the city of the Germany, and political atmosphere in Berlin that was charged with demand. And which demands were there? For the Soviet style governance, means they wanted to bring changes in political field. They wanted, or the demand for the Soviet style governance in their country. Those opposed this, such as the socialist, Democrats and Catholic, means who were opposing to this, that socialist, Democrat and Catholic met in Weimar. कहाँ मिले वो? Weimar. To give the shape to democratic republic. For giving shape to the democratic republic, they met in Weimar. Who met in Weimar? Socialist, Democrat and Catholic. Weimar Republic that crushed the uprising with the help of war veterans organization called what? Free Corps. और इस वीमर रिपब्लिक ने गवर्न क्या किया? दे क्रश द अपराइजिंग. अपराइजिंग मीन्स पॉपुलर रिवोल्ट अगेंस्ट और दैट फॉर ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट with the help of war veterans, means with having the long experience के कारण उन्होंने जो अपराइजिंग या पॉपुलर रिवोल्ट हुआ था, दे ओवरथ्रो द गवर्नमेंट. ऑर्गेनाइजेशन दैट कॉल्ड द फ्री क्रॉप्स. द English Spartacist later founded the Communist Party of Germany. और जो स्पार्टासिस्ट थे उसके बाद उन्होंने क्या फॉर्म की? व्हाट दे फॉर्म हियर? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी. कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth become irreconcilable. IRRECONCILABLE means irreconcilable means what? That is उनके बीच में whatever conflicts they were, they became very strengthened. Veterans means long experience. So here communist and Spartacist henceforth is
कम्युनिस्ट और स्पार्टैसिस्ट, ये दो ग्रुप्स थे. बोथ दे वर अपोनेंट ग्रुप्स. एंड उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हुए. दैट reconcilable means that became much strengthened. They became the enemies and could not make the common cause against the Hitler. Both revolutionaries and militant nationalists crave for the radical solution. और इन्होंने रिवॉल्यूशनरीज मीन्स revolutionaries and military nationalists, what they done, they crave means desired strongly for the radical solution. यहाँ radical solution की desire थी. To whom? Both the revolutionary and military nationalist. Then political radicalism that was the social and political movement for bringing the changes in structure of society. So political radicalism radicalization was only heightened by the economic crisis of the 1923. Means in this year great economical crisis arose. Germany had fought the war largely on loan. इकोनॉमिकल क्राइसिस 1923 में ज़्यादा हुए क्योंकि जर्मनी दे इन्वॉल्व इन दिस फर्स्ट वॉर और हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन द लोन. Germany fought by taking the loan and had to pay the war reparation. और जर्मनी को क्या देना था? वॉर रिपारेशन मीन्स पेनल्टी. जो भी एक्सपेंडिचर टेकन प्लेस ऑफ द एलिज कंट्री, तो उनको दंड देना था या रिकवरी. दैट वाज डन फ्रॉम द Germany because Germany has no voice. That country was defeated and had to pay the war reparation in gold. To whom? Allies. This depleted gold reserve at a time resources were scarce. और इसी के कारण जो गोल्ड रिजर्व जो थे जर्मनी में, दैट डिप्लेक्टेड मीन्स वो ख़त्म हुए. एंड देयर वाज द शॉर्टेज. स्केयर मीन्स शॉर्टेज ऑफ द गोल्ड रिजर्व्स. इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे. और 1923 में because of shortage, scarcity, Germany refused for what? To pay, and the French occupied its leading industrial area, Ruhr. It is the name of industrial area in German. industrial areas का नाम है Ruhr. टू क्लेम देयर कोल. तो ये जो एरिया पर किसने क्लेम किया था? फ्रेंच ने. जर्मनी रिटेलिएटेड with the passive resistance and printed paper
करेंसी रेकलेसली, और इस परिस्थितियों में से निकलने के लिए उन्होंने विरोध किया, बट दैट वाज पैसिव रेजिस्टेंस, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते थे. दैट वाज नॉट इन द हैंड फॉर टेकिंग द अप्रोप्रिएट डिसीजन फॉर कमिंग आउट दिस सिचुएशन. German was helpless, and one of the alternative they searched that was not proper solution. They printed paper currency recklessly. बहुत सारे करेंसी जो है वो रेकलेसली उन्होंने प्रिंट किया. दैट इज नॉट सोल्यूशन फॉर कमिंग आउट दिस इकोनॉमिकल क्राइसिस. With too much printed money in circulation, the value of German mark fell. Mark, it is the currency of German, and because of printing abundant currency, their value came down, that is failed. And in April, the US dollar was equal to 24 marks, and in July their devaluation again, German's currency devaluation taken place, and US dollar value became 353,000, and in August that became 4 lakh 62,000. 4,62,01,000 in August, and day by day that became the devaluation of their currency. And then figure it is given by December, figure had run to trillion means खरबों. As the value of mark collapse, जर्मन करेंसी की वैल्यू जैसे ही कोलैप्स हुई, प्राइसेस ऑफ गुड soared. The imagine of German carrying cartload of the currency note to buy the loaf of bread was widely published. Evoking worldwide sympathy. और इतनी वैल्यू इस मार्क करेंसी की कम हुई कि ब्रेड लाने के लिए कितने पैसे लेके जाने पड़ते थे. कैरिंग द कार्ट लोड ऑफ करेंसी मीन्स बैलगाड़ी में भरते हुए करेंसी लेके जानी पड़ती थी, क्योंकि उसका डिवैल्यूएशन हुआ था. फॉर परचेसिंग द लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए. और इसी के कारण जर्मन दैट इवॉल्विंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी, और जर्मन को क्या मिली? सिंपैथी, वर्ल्ड वाइड सिंपैथी. दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज, और इसी क्राइसिस को, इकोनॉमिकल क्राइसिस को क्या कहा है? हाइपर इन्फ्लेशन. मीन्स currency, they recklessly printed currency, and that is why their value comparing to the dollar that came down, and this crisis that was known as hyperinflation. What is the hyperinflation? Situation when prices
rise phenomenally high मीन्स ऐसी सिचुएशन कि प्राइसेस ज़्यादा होते, करेंसी की वैल्यू बहुत कम होती है. एंड देन eventually the American intervened and bailed Germany out of crisis by introducing the Dawes प्लान. और इस इकोनॉमिकल क्राइसिस में सिंपैथी तो मिली बहुत सारी कंट्रीज़ की, बट इस क्राइसिस से अमेरिकन दे इंटरवेंट, उन्होंने मध्यस्थी की एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ क्राइसिस, और इस क्राइसिस से जर्मनी को बाहर निकाला. बेल मीन्स बाहर निकालना. बेल द जर्मनी आउट ऑफ क्राइसिस by using what? Dawes plan, which reworked the term of reparation to ease the financial burden on Germany. So this one is we discuss how the financial burden was imposed on the Germany and what they done and how that prove lost printing currency recklessly. That was not solution, and in this crisis US bailed Germany out of this crisis. Then come to the 1.3 year of depression. Year of depression. The year between 1924 and 28 saw stability. 24 and 28 तक स्टेबिलिटी दिखी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ यूएस they brought economy in their control. But in 1924 to 1928 means they saw this stability till 28. Yet this was built on sand. लेकिन ये जो स्टेबिलिटी थी वो मजबूत नहीं थी. That was built on the sand means that was temporary with the help of US. German investment and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from the USA. और ये जो जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी जो टेम्पररी हुई, दैट वाज ऑफ द शॉर्ट टर्म लोन्स टेकन फ्रॉम द USA. This support was withdrawn when the Wall Street Exchange that crashed in 1929. और जब अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मीन्स इट इज़ जब क्रैश हुआ 1929 में, जैसे कि हम शेयर मार्केट कहते हैं, तो दैट वाज द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ 1929 एंड दे विड्रॉवन USA withdrawn support to German. Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares. और वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कोलैप्स होने के कारण, क्रैश होने के
कारण लोगों ने जो इफर्ट्स लिए to sell, and they started selling their shares, whatever they invested in this Wall Street exchange, they started withdrawing, and that was called here made a frantic effort for selling their shares. On one single day, 24 October, 13 million shares were sold. और एक ही दिन में 24 अक्टूबर में कितने शेयर्स उन्होंने सोल्ड किए? 13 मिलियंस. दिस वन वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. और ये अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ और उसके इफेक्ट भी बहुत सारे कंट्रीज पर भी पड़े. ओवर द नेक्स्ट 3 years, means 1920 to 32, means 3 years between the 1929 to and 1932, the national income of USA fell by half. और जो पहले 29 के पहले जो यूएसए का नेशनल इनकम था वो उससे आधा ही हुआ इस पीरियड में, 29 to 32, इस पीरियड में. दैट केम और दैट फेल बाय द हाफ. फैक्ट्री शट डाउन, जो भी फैक्ट्रीज थी वो शट डाउन हुई. एक्सपोर्ट फेल. फार्मर्स वेयर बैडली हिट. और इस सिचुएशन में एडवर्स सीवियर प्रॉब्लम्स किसके साथ हुआ? फार्मर्स एंड स्पेसिकुलेटर्स withdrawn their money from the market. मीन जो स्पेसिकुलेटर्स होते हैं, जो मार्केट में पैसे लगाते हैं, they withdrawn their money from the market. Means they purchase crops from the farmers, and this speculator withdrew their money from this market, and that is why farmers they badly, or this one was proof for them adverse situation. Factories were also shut down. The effect of this recession in the US इकोनॉमी वेयर फेल्ट वर्ल्ड वाइड. और यूएस में जो इकोनॉमी रिसेशन आया, सिचुएशन रिसेशन इन द यूएस, इफेक्ट दैट फॉल ऑन द और दैट फेल्ट वर्ल्ड वाइड, और उसके परिणाम जो है वो वर्ल्ड वाइड दिखाई दिए. Then Germany, the German economy was worse hit by the economic crisis. और इसी के कारण because of withdrawing support from the withdrawing support from the USA, German economy again that was worst hit by the economic crisis. मीन्स बहुत ही बुरा असर इकोनॉमी, जर्मन इकोनॉमी पे हुआ था. बिकॉज अर्लियर वी डिस्कस दैट मीन्स बूस्ट इकोनॉमिकल क्राइसिस दैट वाज फुलफिल फॉर टेम्पररी पीरियड बिकॉज ऑफ गिविंग द लोन फ्रॉम द अमेरिका. बट दैट वाज just as a puff of dust. So by the 1932, economy was rushed by the economic crisis. Just we have seen. By the 1932,
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस। और 1932 में जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था जर्मन का, दैट वॉज रिड्यूस। Then here industrial production that was reduced to 40% of the 1929, मीन्स 40% प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ था 1929 के लेवल से 1932 में। वर्कर लॉस्ट देयर जॉब्स और बिकॉज ऑफ नॉट मीन्स रिडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन, job workers job or workers they lost their jobs and were paid reduced wages। और जो भी वर्कर्स थे, whatever workers were there, reduction of their wages or paid wages that reduced of the workers। The number of unemployed touch the number of unemployed touched the unprecedented 6 million on the street of the Germany। You will see Germany, you could see the men with placards around their necklace, around their neck, saying, willing to do work, willing to do any work। Unemployed youth placards and simply sat at the street corners, means situation that was very worst, unemployed rate that was increased, and youth in Germany were very helpless। They were sitting on the road by and with the cards and and they were what was their return, that we are ready to do any work, just we want work, even though because of not having work they were playing cards, means this one was the situation। Desperately queued up at the local एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सामने वो क्यू में खड़े रहते थे। डिस्परेटली मीन्स बिकॉज दे वेर वेरी अपसेट, होपलेस, आशा का कोई भी किरण नहीं था। एज जॉब्स डिसअपियर्ड, जैसे उनकी जॉब्स गई, द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस। जैसे यूथ की जॉब जाती है जर्मनी में, तो बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द वर्क they had lot of time, and they were involving this lot of time in criminal activities, and despair became very common। बेचैनी जिसे कहते हैं, हताश, हेल्पलेस, वो बहुत ही कॉमन था जर्मनी में। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज। इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण डीप एंजाइटी मीन्स बेचैनी जिसे कहते हैं, एंजाइटी, अनरेस्ट, that was very common because of economical problems and fear in people। डर था लोगों में। The middle classes, especially salary employees and the pensioners, they saw their saving diminished when the currency lost its value। जब करेंसी की वैल्यू लॉस्ट हुई, तब जो भी सैलरी होल्डर थे या पेंशनर्स थे,
उनका जो सेविंग था वो कम होते जा रहा था बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ देयर करेंसी. स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ employed and the retailers suffer as their businesses got run. Means जो भी स्मॉल बिजनेसमैन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, रिटेलर्स थे, दे सफर देयर बिजनेस गॉट रन. रन मीन्स डिस्ट्रक्शन हुआ था उनके, और डिस्ट्रक्शंस और फॉल देयर बिजनेसेस. द सेक्शन ऑफ सोसाइटी वेयर फील्ड, दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वेयर फील्ड with the fear of proletarianism. Meaning is given here of this word. Proletarianization means to become impoverished to the level of working class. Means जो भी वर्किंग क्लास लोग थे वो बहुत ही गरीब हुए. And anxiety being reduced to the rank of the working class. और गरीब होते होते मजदूर वर्ग आर्थिक स्थिति मीन्स जो भी लोग थे वो गरीब होते होते क्या हुए, मजदूर वर्ग आर्थिक स्थिति में पहुँचे. और वर्स स्टिल द अनएम्प्लॉयड, ओनली organized workers, those who were working in the organized sector, they could manage. ऐसे ही वर्कर्स वो मैनेज कर सकते थे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे. टू कीप देयर हेड अबव द वाटर मीन्स दे वेर सेफ. कीपिंग हेड अबव द वाटर मीन्स दे वेर सेफ इन दिस इकोनॉमिकल क्राइसिस बिकॉज दे हैड salaries. But unemployment weakened their bargaining power. Big businessman was in crisis. बड़े बिजनेसमैन भी बहुत ही क्राइसिस में थे. Large mass of the peasantry means peasant population. बहुत सारे जो peasant population थी, large mass of the peasantry was affected by the sharp fall in agricultural prices. मीन जो भी peasants थे they were affected for the failing or falling agricultural prices. And women unable to feed their children because of poverty or not having the work, their reduced earning, or they had no earning income, and women they were unable to fill their children's stomach and filled with the sense of deep despair. मीन्स बहुत ही हेल्पलेस हुए थे, हताश हुए थे. डिस्पेयर मीन्स हेल्पलेस, हताश. सो हियर in this part till this is sufficient.